Good morning students. Once again welcome back in maths class. Today again we continue our chapter 6, that is percentage. Okay, today we will learn what percent is one number of another. जो one number है वो दूसरे का कितना परसेंट है. जैसे आपके मार्क्स आते हैं, you getting your marks. Suppose you are getting 9 out of 10. So what percent you get? So how we will find that? Okay, today we will learn how we will find what percent वन नंबर ऑफ अनदर, कि वन नंबर जो है वो अनदर का कितना परसेंट है. जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर गेटिंग 9 मार्क्स ऑफ 10. ओके, 9 जो है अब आपका 10 का कितना परसेंट है. अब आपको ये बताना है कि जो 9 है वो व्हाट परसेंट ऑफ 10 का कितना परसेंट है. फॉर दैट व्हाट विल वी डू, वी विल मेक इट इन फ्रैक्शन फॉर्म. सो व्हाट विल वी डू, 9/10, क्योंकि 9 हमें बताना है 10 का कितना परसेंट है. So 9/10, then multiply by 100. For finding percentage, we always do multiply by 100. Okay? For removing percentage, जैसे हमारे पास percentage कुछ हो कि हमें जैसे 9% of 10 का 9% कितना बनेगा, तो उसके लिए तो हम क्या करेंगे 9/10, क्योंकि हमें परसेंटेज रिमूव करना है. तो हम क्या करेंगे 9/10, 9/100. परसेंट मीन्स क्या होता है, आउट ऑफ 100. तो इसके लिए हम करेंगे 9/100 मल्टीप्लाई बाय 10. ओके, बिकॉज वी आर रिमूविंग परसेंटेज. व्हेनेवर परसेंटेज वी हैव टू फाइंड 9% ऑफ 10, दैट मीन्स 9/100 मल्टीप्लाई बाय 10. बट हियर वी हैव टू फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ 9 ऑफ 10, कि जो 9 नंबर है, 9 इज ऑल्सो नंबर एंड 10 इज ऑल्सो नंबर, वन नंबर ऑफ अनदर, कि 9 जो है वो 10 का कितना परसेंट है. सो फॉर दैट व्हाट विल वी डू, 9/10, एंड देन फॉर फाइंडिंग परसेंटेज वी विल डू मल्टीप्लाई बाय 100. क्लियर? नाउ वी शुड कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल. नाउ वी शुड मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर. सो 9 10s आर 90. सो 90%. जो 9, अगर आपके 9 मार्क्स आते हैं 10 में से, सो यू आर गेटिंग 90%. ओके, 9 ऑफ 10 जो 9 है, 10 का कितना परसेंट है, 90%. सो लाइक दिस वी हैव टू फाइंड. एंड इफ देयर इज गिवन परसेंटेज 9% ऑफ 10, अगर आपको निकालना है कि 10 का 9%, जैसे 10 टोटल है आपके पास और उसका 9% कितना बनेगा, तो उसके लिए हम करेंगे 9/100 मल्टीप्लाई बाई 10. अब ये हम इसकी परसेंटेज निकाल रहे हैं कि जो 10 का जो 9% है वो कितना नंबर होता है. ओके, तो इसके लिए हम ऐसे करेंगे. अब 0 से 0 कैंसिल. नाउ 9/10, दैट मीन्स 0.9. ओके, 10 का अगर हम 9% निकालेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 0.9. तो ये तो हम इसका 10 का 9% पार्ट निकाल रहे हैं. ओके, और यहाँ पे कि जो 9 है, अगर 9 हमारे 10 में से आ रहे हैं, सो व्हाट परसेंट वी आर गेटिंग, सो दैट इज द परसेंटेज ऑफ वन नंबर ऑफ अनदर, कि जो 9 है जैसे वो 10 का कितना परसेंट है. ओके, अगर आपको 9 मिल रहा है तो आपको कितना परसेंट मिल रहा है. सपोज पानी मिला दो इसे, पानी पानी
exercise 6.5. Question number 1. Find how much percent is each of the following. अब आपको बताना है कि यहाँ पे every part में how much percent, यहाँ पे कितनी परसेंट है. वन नंबर जो है अनदर नंबर का कितना परसेंट है. सो ए पार्ट इज देयर 10 of 50. सो 10 जो है व्हाट इज द 10 इज द पार्ट ऑफ 50, कि जो 10 है वो 50 का कितना परसेंट है आपको बताना है. सो फॉर दैट व्हाट विल वी डू, 10 upon 50 multiply by 100. Okay, now in 50 table we have 100. So 50 ones are 50 and 52 are 100. Now what will we do? Numerator multiply by numerator. So 10 2 are 20. And in denominator we have 1. So no need to write denominator. So that is 20%. That's your answer. Clear? So like this you can find percentage of one number of another. Okay? जो one number है वो सेकंड का कितना परसेंट है, 10 50 का कितना परसेंट है, दैट इज 20%. ओके, अगर आपको 10 मार्क्स मिलते हैं 50 में से, सो दैट मीन्स यू आर गेटिंग ओनली 20%. क्लियर? नाउ इट्स बी पार्ट. 75 ऑफ 100. जो 75 है वो 100 का कितना पार्ट है. ओके, जो 75 अगर आपको मिलते हैं तो आपको कितनी परसेंट मिलती है. सो वी हैव टू फाइंड 75 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 100 फॉर फाइंडिंग परसेंटेज, क्योंकि हमें ये बताना है कि 75 जो है वो 100 का कितना परसेंट है. सो फॉर दैट वी विल डू मल्टीप्लीकेशन बाय 100. नाउ 100 ones are 100 and 100 ones are 100. Now numerator multiply by numerator. So 75 multiply by 1, that's equals to 75. Now we have to find its percentage, so we use here percentage symbol. So 75%, जो 75 of 100, जो 75 जो है वो 100 का 75%. ओके, क्लियर? नाउ इट्स सी पार्ट. 30 of 120, जो 30 है वो 120 का कितना परसेंट है. सो फॉर दैट व्हाट विल वी डू, 30 अपॉन 120 मल्टीप्लाई बाय 100. Okay, now 0 to 0 cancel, 3 ones are 3, 3 fours are 12. Okay, in 4 table we have 100 also. So 4 ones are 4 and 4 25s are 100. 4 2s are 8 and 4 5s are 20. Clear? Now numerator multiply by numerator. 25 ones are 25. Okay, 25 ones are 25 and there is denominator is 1. So that means no need to take here denominator, so that is 25%. Clear? Okay, so how much is there? 25%. So like this you have to find the percentage. So 30 जो है वो 120 का कितना परसेंट है, 25%. अगर आपको 120 में से 30 रुपीज मिलते हैं या 120 मार्क्स में से 30 मार्क्स मिलते हैं, सो दैट मीन्स यू आर गेटिंग 25%. देखो आप यहाँ पे भी वेरीफाई कर सकते हो, जैसे 30 fours are 120 and 25 fours are 100. जितना पार्ट होगा फोर्थ पार्ट, मतलब आप 30 जो है 120 का फोर्थ पार्ट है, तो 100 का फोर्थ पार्ट क्या होगा, 25, क्योंकि परसेंटेज मीन्स क्या होता है, आउट ऑफ 100. ओके, कि आपको अगर ये हमने 120 को 100 में से बना दिया, परसेंटेज का मतलब होता है वी आर फाइंडिंग आउट ऑफ 100. तो अब हमारे पास जैसे टोटल 50 था, लेकिन हमने उसको कितने का बना दिया, 100 का. जैसे आपके मार्क्स आते हैं, आपके 500 में से आते हैं, बट हम उसकी परसेंटेज जब हम फाइंड करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने उसके टोटल मार्क्स जो है वो 100 के बना दिए. सो दैट इज परसेंटेज. सो लाइक दिस यू हैव टू फाइंड percentage of one number of another. Now question number 2. Find how much percent is each of the following. Here you also find percentage. Okay, so but in first question you have numbers to number, but in second question you have units. There is also numbers, but there is given with the units. Okay, so firstly we will see their unit and then we have to find their percentage. Now A part is there, 25 paise of rupees 24. Now there is given paise and
there is given rupees. So first of all we should make the same unit. सबसे पहले हमारा वर्क होता है कि हम सेम यूनिट बनाएं, then we have to find the percentage, क्योंकि परसेंटेज सेम यूनिट में निकलती है. So here is rupees. So first of all we convert this rupee into पैसे. So as we know, in 1 rupee there is 100 paise. So there is given rupees 24. So firstly we convert rupees 24 into paise. So 24 multiply by 100, because in 1 rupee there is 100 paise. Okay, 1 rupee में 100 होते हैं, तो 24 में 24 multiply by 100. So that's equals to 2400 paise. Okay, now it's become पैसे. अब पैसे से पैसे हो गया. अब 25 पैसे आपको लेने हैं 2400 पैसे. Okay, so now we will find percentage. 25 upon 2400 multiply by 100. For finding percentage we will do multiply by 100. Now 0 to 0 cancel, 0 to 0 cancel. Okay, now 25 upon 24. Okay, in 25 table, so 25 comes in 5 table, but 24 not come in 5 table. That means we will write in fraction form. 25 upon 24%. Clear? Now we can change it into decimal and into mixed fraction. हम इसको decimal में भी कर सकते हैं, हम इसको mixed fraction में भी कर सकते हैं. Okay? So if we want to do in decimal, how we will do? 25 divided by 24. अब यहाँ पे हम कर लेते हैं 25 divided by 24. 24's 1 are 24. Now 1 we get remainder. So if we are writing in mixed fraction, so what will we write? 1 whole 1 upon 24. But we will find in decimal. Okay, हम decimal में find कर लेते हैं. So what will we do? We will put here decimal and now we write here 0. Now we note down 0. But in 24 table we don't have 10. So what will we do? 24 zeros are 0. Okay. Now 10 minus 0, that is 10. Now again we can, because we will take 2 decimal place. Okay. So again we will write here 0 and note down 0. Now in 24 table, where is 100? We don't have 100, but 24 fours are 96. Okay. So we will take on the 4, 24 fours are 96. Now 100 minus 96 we get 4. Okay. Now there is no need to do more, because we will take only 2 decimal place. जो हमारे पास remainder है, that we will leave. We will get here approximate answer. जो हमारा आंसर हम decimal में ले रहे हैं ये approximate आएगा, because we are not getting remainder 0. जो हमारा remainder है वो हमारे पास 0 नहीं आ रहा. So now there is 2 decimal place, so there also will take 2 decimal place. So 1, 2. Here we will put a point. So your answer is 1.04. So we can write here 1.04%. Clear? आप इसको अगर मिक्स्ड में राइट करोगे तो 1 whole 1 upon 24. That is your answer. Okay, beta? So like this you will do A part. Now we will do B part. B part is given here 7 gram of 35 kg. Okay, 7 gram of 35 kg. Now there is gram and there is kg. So again we will convert, because we require same unit. Clear? There is gram, there is kg. So we convert kg into gram. So as we know that in 1 kg there is 1000 gram. Okay. So in 35 kg, 35 multiply by 1000. 35 kg equals to 35 multiply by 1000. So that's equals to 35,000. What? Gram. Now it's changed. Okay. Now we can find its percentage. So now we find 7 gram पूछा हमसे upon 35,000 multiply by 100. Okay, because in for finding percentage we do multiply by 100. Now 0 to 0 cancel. Double 0 is there, so we will cancel double 0 to double 0. Okay. Now in 7 table we have 35 also. So 7 ones are 7, 7 fives are 35, 7 zeros are 0. 350 को हमने 7 से कैंसिल कर दिया. 7 fives are 35, 7 zeros are 0.
Okay. Now your answer is 1 upon 50%. 1 upon 50%. Clear? We can write it into decimal form also. हम इसको decimal form में भी write कर सकते हैं. We can leave in percentage fraction form also. Okay? हम इसको fraction form में भी छोड़ सकते हैं. And we can write in decimal form also. अगर आपको decimal में करना है तो हम कैसे करेंगे? 1 divided by 50. Okay, 1 divided by 50. So in 50 table we don't have 1. So we'll write here 0. Now we put here point. Now we take here 0. Now there is 10. 10 also not come in 50 table. So again we write here 0. Now we note down one more 0 because we will take 2 decimal place. Okay, so now it's become 100. Now in 50 table where is 100? 52 are 100. Now 100 minus 100, 0. Now there is 2 decimal place, so in quotient also will take 2 decimal place. So your answer becomes 0.02. 0.02. That's your answer. So we will write here that's equals to 0.02%. That is your answer. Clear, beta? So like this you can write. Okay, you can do in percentage. You can find percentage. Okay. Your answer you can leave in fraction form also. अगर आप fraction में भी छोड़ते हो तो भी आपका correct है. That is not wrong. And you can change that into the decimal form. Clear? Now it's a C part. In C part what we have? 60 ml of 125 liter. Here is also given there is milliliter and there is liter. So again we should make them same unit. Unit हमारी same होनी चाहिए. Then we can find percentage. So now as we know 1 liter equals to 1000 milliliter. So 125 liter equals to 125 multiplied by 1000. Okay. So that's equals to 1,25,000 ml. Clear? 125 multiplied by 1000, so it's become 1,25,000 milliliter. One more thing, आप मिलीलीटर को लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो. डेसिमल में आंसर आएगा फिर आपका. ओके, ऐसा नहीं कि मैंने लीटर को किया है मिलीलीटर में तो आप भी वही करो, क्योंकि इससे इजी होता है. जैसे आप हायर यूनिट को स्मॉलर में इजीली कन्वर्ट कर लेते हो और स्मॉलर को हायर में करोगे, आप इसको डिवाइडेड बाय 1000 करोगे, फिर आप इसको डेसिमल फॉर्म में राइट करोगे. ओके, सो दैट्स बेटर कि हम बिग यूनिट को ही स्मॉल में कन्वर्ट कर ले. सो इजीली वी कैन कैंसिल ऑल्सो, इजीली वी कैन सॉल्व ऑल्सो. नाउ वी फाइंड इट्स परसेंटेज. 60 upon 1,25,000 multiply by 100. Okay, we will do multiply by 100 because we are finding percentage. Now 0 to 0 cancel, 0 to 0 cancel. Now there is also 0, so by this 0 we can cancel third 0 also. Okay, now we will see that 125 will come in 5 table. It will not come in 2 table also, in 3 table also. Now तो ये 2 की टेबल में आएगा ना, ये 3 की टेबल में आएगा. It will come in 5 table and 6 will come only in 2 and 3 table and in 6 table. So they are not coming in each other table. So we can write 6 upon 125%. Clear? 6 upon 125%. When we divide it, we change it into decimal form. So what will come? We will do 6 divided by 125. So 6 divided by 125. So in 125 table we don't have 6. So we will write here 0. Now put here point 60. 60 also not come in 125 table. So again we will put here 0. Okay. Now one more 0 we will take. Now in 125 table we have 500. 125 fours are 500. Okay. Now 0, 0, 1. Again we are getting remainder, but no need to take more. We can leave here only and we will take here 2 decimal place. Okay. So your answer is 0.04. In decimal form it's come 0.04%. Clear? But this is not actual, this is approximate. We can write it 0.05 also because our remainder is 100 and divisor is 125.
तो हम इसे 0.05 भी लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट में, एंड वी कैन राइट 0.04%. It can come 0.05 also, because in the last we are getting 100 और आपका डिवाइजर 125 है, so 100 is near by 125. So in that condition we can increase one more. हम इसको एक और आगे बढ़ा सकते हैं. Okay, but you can write 0.04 also, 0.04%. So like this you have to find percentage. Now it's a D part. Now question number 2, D part. D part is there. Rupees 10.28 is blank percent of rupees 41.12. Here is given rupees 10.28 and here is given rupees 41.12. Okay, so both are in decimal form. So first of all we change that into, we should remove the decimal. So when we remove the decimal, so it's become पैसे. Okay, ये आपके पास क्या बन जाएंगे? पैसे. Because we want to remove the decimal. हमें decimal को remove करना है. Units तो सेम है, रुपी. So उससे कोई फर्क नहीं है. Unit तो हमें change नहीं करनी. But there is decimal given in both. So we should remove the decimal. Okay. So when we remove this decimal, so it's become पैसे. तो ये आपका पूरा क्या बन जाएगा? पैसे. And this one also become पैसे. So rupees 10.28. That's equals to 1028 पैसे. As we know, when we convert into पैसे, we remove the decimal. तो हमने ये decimal remove किया, so it's become पैसे. Now next is rupees 41.12. So now again we should remove the decimal. Decimal अब remove करेंगे, यहाँ पे भी decimal है, so we remove this decimal. So it's become 4112 पैसे. Now we can find its percentage. Okay, अब हम इसकी percentage find कर सकते हैं. So now there is given this is blank percent of this. इसकी percentage ये जो है 1028, वो इसका 4112 का कितना परसेंट है? So that means 1028 will be numerator. 1028 upon 4112 multiplied by 100. Okay, now we'll solve it. So what will we do? We know that both are coming in 100 and 4112. Both are coming in 4 table. 100 जो है हमारा 4 की table में आता है, and 4112 also will come in 4 table. So we'll divide by 4. Both numerator and denominators we should divide by 4. So 4 2s are 8 and 4 5s are 20. Now 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 1s are 4. Now we note down 1, so 1 will not come in 4 tables, so 4 zeros are 0. Now it's become 11. हम 4112 को 4 से डिवाइड करेंगे, so 4 1s are 4, then we note down this 1, so that means this one will not divide by 4, so we use here 0. Now it's become 11. So 11 will not come in 4 tables. So what will we do? 4 2s are 8. Then 11 minus 8, that's 3. With 3 we use 2, 32. 4 8s are 32. So it's become 1028. Now 1028 is our numerator and denominator also 1028. So 1028 ones are 1028. 1028 ones are 1028. It is finished. Now numerator multiply by numerator, and in denominator we have only 1, so we can leave out denominator. 25 ones are 25 and it's a percent, so 25%. That's your answer. Clear? So like this you have to find. So first of all we should remove the decimal. सबसे पहले हम decimal को remove करेंगे. Clear बेटा? So now it's a E part. E part is there 2.7 millimeter of 10.8 centimeter. Now there is centimeter and there is millimeter. So first of all we change them. We should make the same units. There is millimeter and there is centimeter. So firstly we should make centimeter into millimeter. So as we know that 1 centimeter equals to 10 millimeter. जो 1 centimeter उसमें 10 millimeter होते हैं.
So now there is 10.8 centimeter. So we convert it into millimeter. So centimeter to millimeter, we should multiply by 10. Okay, because centimeter is big and millimeter is small. So we will do multiply by 10. So 10.8 multiply by 10. So when we multiply by 10, so as we know that one decimal place move in the right side. ओके जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो डेसिमल है सिर्फ वो मूव करेगा राइट साइड में. ओके तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा 108 मिलीमीटर. 108 millimeter. Okay, now it's millimeter and this is also millimeter, but you can see that 2.7, this is in decimal, so we should remove its decimal. अब हम इसका डेसिमल रिमूव करेंगे. देयर इज 2.7 मिलीमीटर. सो हाउ कैन वी रिमूव द डेसिमल? अभी डेसिमल हमें हटाना है. सो फॉर रिमूविंग डेसिमल व्हाट वी कैन डू? वी कैन टेक 10 एज अ डिनोमिनेटर. एट द प्लेस ऑफ डेसिमल वी कैन यूज 1 and one decimal place is there, so we can use for that denominator 10. So it's equals to 27/10. Okay, क्योंकि हमने डेसिमल को खत्म किया है. जब हम डेसिमल को रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर क्या आ गया हमारा 10. So 27/10 millimeter. अब हमने डेसिमल को रिमूव कर दिया. Now there we have 2.7 millimeter of 10.8 centimeter. 10.8 centimeter बन गया 108 millimeter. Okay, and 2.7 millimeter means 27/10. अब हमारे पास क्या होता है? अब 2.7 जो है हमारा, ये बताना है कि 2.7 10.8 सेंटीमीटर का कितना परसेंट है. ओके, so this will come in numerator and 108 will come in denominator. So there we have 27/10. Now there is already denominator. So how we will write this in denominator? अब इसको हम डिनोमिनेटर में कैसे राइट करें? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 10 है डिनोमिनेटर में, तो इस डिनोमिनेटर के साथ में हमारे पास आ जाएगा 108. हम इसको मल्टीप्लाई में राइट कर देंगे क्योंकि ये भी हमें डिनोमिनेटर में राइट करना है. सो वी शुड राइट मल्टीप्लाई 108. 10 is already denominator and 108 also will come in denominator. And now multiply by 100. What will we do? Multiply by 100. इसको थोड़ा स्मॉल कर देते हैं. So now multiply by 100. Now we should cancel 0 by 0, 0 cancel. Okay. Now we will see that 108 come in 3 table and 27 also come in 3 table. So we can cancel by 3. 3 3s are 9 and 3 6 are 18. Okay. And in 3 table we have 3 9s are 27. Again. You know that 36 come in 9 table. 9 4s are 36. जो 9 4s है वो क्या होता है 36. So 9 1s are 9 and 9 4s are 36. Okay. Now 4 and 10 both come in 2 table. अब हम इस साइड से चेक करते हैं. यहाँ पे तो 1 आ गया हमारा न्यूमरेटर, तो ये तो फिनिश हो गया. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास है न्यूमरेटर में 10 and there is 4. So now both come in 2 table. So 2 2s are 4 and 2 5s are 10. Clear? So now here is 5 and here is numerator 1 and in denominator we have 2. So now we should multiply numerator by numerator and denominator by denominator. Clear? तो अब numerator से numerator को multiply करेंगे और denominator से denominator को. So now we will do. So there is 5 1s are 5 and in denominator what we have 1. No, sorry, 2. 2 1s are 2. So now 5/2 we should convert this into the decimal form. So 5 divided by 2. अब 5 को हम 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5 divided by 2. 2 2s are 4. 1 we put here point. Now 10. 2 5s are 10. 10 minus 10 0. One decimal place is there, so in quotient also one decimal place. So it's become 2.5. आपके पास क्या आ गया 2.5. जब 5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आप डिवाइड करके देख सकते हो, you will get 2.5. So percentage that's equals to 2.5%. That is your answer. Okay, so that's your answer.
So like this you will solve its e part. कैंसिलिंग आपको ध्यान से करना है. आपको पहले हमने 4 से कैंसिल किया इसको, देन भी, और डायरेक्टली आप 27 से भी कर सकते हो. 27 4s are 108. आप डायरेक्ट भी कर सकते थे बिकॉज इन 27 टेबल एट द 4 नंबर वी हैव 108. सो 27 1s are 27 एंड 27 4s are 108. और फिर 4 से आप 4 एंड 10 बोथ आर डिविजिबल बाय 2, तो आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो. ओके, आप कैसे भी कर सकते हो, बोथ आर करेक्ट. Clear? Now it's a next part, F. Now question number 2, F part. There is given 62/3 gram of 900 gram. अब आपको बताना है 62/3 ग्राम जो है वो 900 ग्राम का कितना परसेंट है. So here is also gram and here is also gram. So units are same. Unit जो है वो तो आपके पास क्या है, same. Unit में कोई difference नहीं है. So now we can find. So 62/3, 62, there is given 62/3. Okay. Now upon 900. अब हमें इसके डिनोमिनेटर में 900 राइट करना है. So how we will write 900 as a denominator? So with this denominator we should write in multiply 900. क्योंकि 900 को भी हमें 3 is already in denominator, but 900 also we should write in the denominator. So how we can write 900 in denominator? With 3 we should write in multiplication form. Multiply by 900 because 900 also come in denominator. Now multiply by 100 because we are finding percentage, so we will do multiply by 100. Clear? Now 0 to 0 cancel, 0 to 0 cancel. Okay beta? Now there is 3 into 9. And in numerator we have 62. 62 don't come in 3 table also, and 9 also come in 3 table and 9 table, so it's not come in 3 and 9 table. So now numerator multiply by numerator and denominator multiply by denominator. So 62 ones are 62 and 3 nines are 27. Clear? Now this is improper fraction, so we change it into the डेसिमल फॉर्म और इन मिक्स्ड फ्रैक्शन. हम किसी में भी कर सकते हैं, चाहे डेसिमल में चाहे मिक्स्ड में. तो अब हम इसको डेसिमल फॉर्म में करेंगे. 62 डिवाइडेड बाय 27. 62 डिवाइडेड बाय 27. 27 2 jar 54. Okay, now 12 minus 4 8. Now we put here point. Now we take here 0. 27 3 jar 81. So 81 is greater than 80. So we'll take on 2 again. 27 2 jar 54. Now minus 10 minus 4 6 and 7 minus 5 2. Again we take one time more 0 because we are not getting remainder 0. So note down 0. Now where we will take, we will see that 27 to 9. On the 9 numbers we will check that we are getting 9 7s are 63. 9 पे भी आएगा बेटा आपके पास. 9 पे आएगा आपका 263. सॉरी नहीं, 9 पे करेक्ट आएगा आपका. We will take on 9. So we will take on 9. 9 7s are 63. 6 goes carry. 9 2 jar 18. 18 plus 6 24. Okay. So we will take on the 9. Now there is 10 minus 3 7 and 5 minus 4 1. Again we get 17 as a remainder. But now we can leave here because there is 2 decimal place. हमने 2 decimal place ले लिए. Most हमारे पास होते हैं 2. इससे ज़्यादा हम निकालने जाए that's our choice. हम फिर से 0 लेके फिर से नोट कर ले. But no need to take more. You should take only 2 decimal place. So there is 2 decimal place. In the quotient also will take 2 decimal place. So there is before between 2 and 2 we will put here decimal. Okay. So our answer become 2.29. So we write here. This is in percentage, so we use here also percentage symbol. 62/27%, that's equals to 2.29%. Clear? Like this we have to solve. ऐसे आप divide करके देख सकते हैं and you can write in decimal form. 62 divided by 27, so your answer come 2.29%. तो आपने कैसे करना है, जो ऑलरेडी फ्रैक्शन में हो तो आपको जो डिनोमिनेटर में नंबर लेना है वो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई में राइट कर देना. ओके, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100. सो लाइक दिस यू हैव टू फाइंड
So your question second complete. Now we will do question number 3. Now question number 3, A part. Simi has read 250 pages of a book of 500 pages. मीन्स बुक में टोटल पेज है 500 और सिमी ने जो रीड किए हैं वो किए हैं 250. सो व्हाट परसेंट ऑफ बुक हैज सी रीड. तो बुक का जो है कितना परसेंट उसने रीड कर लिया. ओके, सो फॉर दैट वी विल फाइंड इट्स परसेंटेज. So here let me start our solution. There is given total page in book. Total page in book is 500. So we write here 500. Now how many Simi has read? Simi has read pages equals to 250. Total page are 500 और Simi ने जो read किए हैं वो किए हैं 250. So what percent of the book has she read? So we will write here percent of the book she has read. See why we are writing here? Because already we have written the name of Simi here. So she has read. For that what will we do? We will find its percentage. There is she read 250 and total page are 500. So we write here 250 upon 500 multiply by 100. Okay. क्योंकि टोटल 500 पेज थे उसमें से 250 सिमी ने रीड किए हैं तो उसने कितनी परसेंट रीड की है. फॉर दैट वी विल डू 250 अपॉन 500 मल्टीप्लाई बाय 100. नाउ 0 to 0 cancel, 0 to 0 cancel. Now in 5 table we have 250 because in ones column 0. So 5 ones are 5, 5 fives are 25, 5 zeros are 0. So now denominator become 1 and numerator there is 50 and there is 1. 50 multiplied by 1 that's equals to 50, 51s are 50. So 50%. Okay. तो सिमी ने कितना रीड कर लिया 50%. That's your answer. यही पूछा था आपसे कि how much percent कि कितने परसेंट what percent of the book has she read. उसने कितनी बुक का जो है कितना परसेंट रीड कर लिया. So she read 50%. Okay. Now it's a B part. Now B part. Mira has ran 2.5 किलोमीटर आउट ऑफ आ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर. 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में से मीरा जो है वो 2.5 किलोमीटर दौड़ चुकी है. ओके, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल डिस्टेंस हैज शी रन. तो वो टोटल डिस्टेंस का कितना दौड़ी. अब आपको उसकी परसेंटेज निकालनी है कि कितना परसेंट वो दौड़ी है टोटल डिस्टेंस का. ओके, सो लेट मी स्टार्ट सॉल्यूशन. First of all, total distance. How much total distance? 10 kilometer. So we write here 10 kilometer. Now Meera has run. Meera कितना दौड़ी है? 2.5 kilometer. So Meera has run 2.5 kilometer. Now what percent of total distance has she run? तो what को हटा देंगे? Percent of total distance she has run. For that we will find its percentage. But now we will see that जो Meera has ran 2.5 kilometer. This is in the decimal form. So firstly we change decimal. Okay, हम सबसे पहले हम इस decimal को remove करेंगे. So for removing decimal, what will we do? 2.5. That's equals to 25 upon 10 kilometer. First of all, we should remove the decimal, so it's become 25 upon 10 kilometer. Because when we remove the decimal, so at the place of decimal 1 and then 1 decimal place is there, so we will put here 4 point decimal place, we will put here 0. So 25 upon 10 kilometer. Now we find it. So run upon total. जो परसेंटेज का मेथड होता है obtain upon total. तो run कितना किया है 25 upon 10. So run 25 upon 10 अपॉन टोटल. अब इसका डिनोमिनेटर करना, तो इसका डिनोमिनेटर मैंने आपको कहा था ऑलरेडी डिनोमिनेटर और फिर से हमें डिनोमिनेटर करना है इसका. सो वी शुड राइट दैट डिनोमिनेटर एज मल्टीप्लिकेशन विद प्रीवियस डिनोमिनेटर. जो पहले से डिनोमिनेटर है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में हम सेकंड डिनोमिनेटर भी राइट कर लेंगे. अपॉन में लेना था हमें 10 तो हमने इसके साथ ले लिया मल्टीप्लाई बाय 10. एंड नाउ इन न्यूमरेटर बिकॉज वी आर फाइंडिंग परसेंटेज, so in numerator multiply by 100. Okay, now 10 ones are 10, 10 tens are 100.
Now 10 ones are 10, 10 ones are 10. Finish. Okay. Now we should multiply numerator by numerator and denominator by denominator. So 25 ones are 25 and in denominator 1 ones are 1. So 25 upon 1%. That's equals to 25%. तो कितना रन किया है? So percentage of total distance he has run equals to 25%. So Meera has run 25%. That's your answer. जो मीरा कितना दौड़ी है 25%. Now we will do its C part. C part. Dr. Sen has to pay a tax of rupees 5,000. Okay. डॉक्टर सेन को जो है एज ए टैक्स 5,000 रुपीज पे करने हैं. इफ ही हैज बीन एबल टू पे ओनली रुपीज 250, अगर वो सिर्फ 250 रुपीज दे सकता है, मतलब उसकी कंडीशन ऐसी है कि ही कैन पे ओनली 250 रुपीज. सो व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल टैक्स हैज ही पेड? तो उसने टोटल टैक्स का कितना परसेंट पे कर दिया, तो उसकी परसेंटेज आपको फाइंड करनी है. So first of all, let me start solution. First of all, total amount of tax. Total amount of tax is rupees 5,000. क्योंकि उसको टैक्स कितना पे करना था 5,000 का. So first of all, we will write total. Then Dr. Sen has been able to pay. कितना पे करने के लिए able है वो? रुपीज 250. So percent of the total tax he has paid. तो उसने कितना परसेंट पे कर दिया, कितना वो एबल है पे करने के लिए. जो उसने जितना एबल है उतना ही तो पे करेगा. जब उसकी कंडीशन 250 की तो 250 ही पे कर सकता था. हम उसी की परसेंटेज फाइंड करेंगे. ओके. सो नाउ 250 अपॉन 5,000. नाउ वी आर फाइंडिंग परसेंटेज. ऑब्टेन मींस जितना वो पे कर सकता है, दैट अपॉन टोटल. टोटल इज 5,000, सो अपॉन टोटल इनटू 100, because we are finding percentage. Okay, so we solve it. Now 0 to 0 cancel, 0 to 0 cancel, this 0 to this 0 cancel, 3 zeros are cancelled. Now in 5 table we have 25, 5 ones are 5 and 5 5s are 25. Now in numerator there is 5 and there is 1 and in denominator there is 1. So now 5 ones are 5, so 5%. How much he is able to pay? 5%. So he can pay only 5%. So the percentage of total tax he has paid equals to 5%. That's your answer. So like this you will complete your question number 3 and your chapter also finish. So complete your exercise. Thank you.